So basically we are going to learn that how to create the class, how to define the method, and how to create the object and attribute of in that object, and how to start and class. So as all of you know, all of you are familiar, the Python is also the object oriented programming like the C++ and the Java. And all of you are familiar with the OOPS concept. Like what is the OOPS programming concept? Data abstraction. Object-oriented programming. Yes. So a methodology that defines the problem in terms of objects that send message to each other. You have learned the operator overloading or polymorphism in C++ पढ़ी है ना आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So by defining that term as how the object can send the message or how the object can communicate with each other, so we can have the concept of that polymorphism or inheritance. So we can say that एक ऑब्जेक्ट आप एक ऑब्जेक्ट की क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आपने उसको इनहेरिट किया है तो आप बेस क्लास के मेथड एंड फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं. So it means they are accessible from the outside the class also. So object-oriented programming is offering that one object can send message to each other. So these are the some basic entities of the object-oriented. Like what is an object? So object is basically a single software unit that combines attributes and the method. यानी जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज में जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, उनको एक्सेस करने के लिए और उनके मेथड को यानी उनके बिहेवियर को एक्सेस करने के लिए जो आप यूनिट यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट. एट्रीब्यूट क्या होता है? जो आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, या जिसे हम कहते हैं जो हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं, दैट इज नोन एज द एट्रीब्यूट. A characteristic of an object, like a variable associated with a kind of object. For example, like roll number, name, these are the attributes, and student S1 and S2 is an object. And when we are combining the number of objects, we are having the class concept. Method means the functions. A behavior of an object, like a function associated with that kind of object. Yani the function which we are going to use for defining or for initializing the data member or the properties of that object, we are going to use the method concept. And class, a code that defines the attributes and the method of a kind of a class. So basically it is a collection of the variable and the functions working with these variables. जहाँ पर आप कहते हैं कि where we are using the properties and the state of that behavior of that an object to recall or to initialize of that is known as the class. So it is a kind of blueprint, or you can say that it is a kind of template which is combining all these concepts like object, data members and the methods. So these are the basic functional fundamental concept of the OOP. Information hiding, all of you are familiar with this, that information is secured. Abstraction, that we don't know the what is happening in the background, but we know the functionality, or we can say that we know the feature of that concept. Encapsulation, binding of data and functions together. Modularity, where we are dividing the code, or when we are using the number of, when we are breaking the code into the number of functions, this is known as the modularity. Polymorphism, that is the more than one form. We have the two concepts for that, that is the function overloading and the operator overloading. And then we have the inheritance. Inheritance means we can use the properties of another class into the some different class. Fine? Yes, Fine, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. How to create a class for an object? So in Python, when we want to create a class, still जैसे हम C++ में भी class keyword use करते हैं, we also use the class keyword in that also. So first we will use the keyword class, and it is will be in the small case. It will not be in the uppercase. Class and then the class name. Like जैसे हम वहाँ पे करते हैं ना class student. So similarly we can have the class keyword and then the class name which we want to define, and then colon is there. ठीक है. और ये ब्रैकेट में जो ऑब्जेक्ट्स लेगा, इट इज ऑप्शनल वन, इट इज नॉट मैंडेटरी टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट इन अ ब्रैकेट. सो यू कैन सिंपली राइट द क्लास स्टूडेंट एंड देन कॉलन. Then we have the special function in case of Python when we are using the concept of object and classes. This is known as the init functions. All of you know the constructor and destructor in the class C++? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होता है constructor? It is used to initialize the object. It is used to initialize the object.
or when we know that if no function is defined, then by default whenever an object is created, your constructor is called automatically, isn't it? Yes. Yes, ma'am. When we create the constructor, or suppose we didn't define any method, or we didn't define any that member function in C++, but when we create the object of that class, so by default आपका जो भी कंस्ट्रक्टर होगा वो कंस्ट्रक्टर आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है whenever we are creating the object. Similarly in case of but C++ में आप क्या करते हैं कि we use the same function name and the same class name for creating the constructor. ऐसा ही? Yes, ma'am. Ma'am. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We use the same function name and the same class name. मतलब function name and class name जब हमारे दोनों same होते हैं, तो जो हमारा function name हम class name से initiate करते हैं, that is known as the constructor, because जो member functions होते हैं, जो method होते हैं, वो हम कभी भी class के name पे नहीं रखते हैं, but constructor का जो name होता है, वो हमेशा आपके class के name के से match होता है. although it depends कि आपका कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है. सो बेस्ड ऑन दैट, सो इन पाइथन वी यूज द init function, that is a special member function, you can say, a special method to create the instance of an object. यानी जैसे वहां पर आपका कंस्ट्रक्टर का फंक्शन होता है, सेम फंक्शन इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ init function. तो आपको मालूम है कि पाइथन में फंक्शंस आप लोगों ने कर लिए, फंक्शंस कर लिए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फंक्शंस को कैसे Yes, डिफाइन ma'am. करते हैं पाइथन में? यूजिंग द कीवर्ड def. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिमिलरली क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपका एक स्पेशल मेथड होता है, तो इट इज ऑल्सो डिफाइंड विद द कीवर्ड def, बट आफ्टर दैट वी हैव द स्पेशल टू अंडरस्कोर. दीज आर द टू अंडरस्कोर, नॉट अ सिंगल अंडरस्कोर. So constructor is defined as def, then 2 times underscore, then init, again 2 times underscore, and then in a bracket self, and within a bracket if you have the parameter for defining that functions, or you can say the constructor, you can define that parameter. Otherwise not necessary to have the variable in the init function, but self is a keyword which is defined with the init keyword. यानी जब कभी भी आप init functions को डिफाइन करेंगे, इट इज ऑलवेज डिफाइंड विद द सेल्फ, यानी उसमें आपका सेल्फ एज एन आर्ग्यूमेंट हमेशा आपका पास होगा. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेल्फ कीवर्ड? सेल्फ कीवर्ड का बेसिकली फंक्शन होता है आपके ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करने के लिए. तो जब हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे, सो वी ऑलवेज यूज द def, 2 time underscore init, 2 time again underscore, and within a bracket self. Variable names are optional, you can have or you can not have. Yeah, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू कि यू वांट टू यूज दैट वेरिएबल नेम और नॉट, ठीक है. एंड एज वी नो दैट फंक्शंस इज डिफाइंड विद द कॉलन, सो वी ऑलवेज यूज द विद एन आफ्टर ब्रैकेट अ कॉलन. तो जब आप वेरिएबल को एक्सेस करते हैं इन अ डाटा मेंबर, यानी अपने मेंबर डाटा मेंबर को कभी भी जब आप एक्सेस करते हैं, आप क्या यूज करते हैं? अगर मान लो आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको डाटा मेंबर एक्सेस करना है, तो व्हाट वी विल यूज? c1 डॉट नेम इक्वल टू, देन यू गिव द वेरिएबल नेम, वैल्यू जो भी आप देना चाहते हैं. ऐसे ही करते हैं. यानी अगर मेरे पास एक स्टूडेंट एक वर्ड क्लास है, रोल नंबर और नेम उसके 2 डाटा मेंबर हैं, एंड आई वांट टू एक्सेस दैट डाटा मेंबर यूजिंग द ऑब्जेक्ट. सो व्हाट आई विल राइट? I will write s1 dot roll number is equal to, then I can give the value. That I can do. ठीक है. So similarly, we can use this concept also. So because we are using the self keyword for initializing the object, you can say that. So we are using the self dot name is equal to name. So whatever we are passing when the object is created. So जो आप नेम एंड कलर की जो ऑटोमेटिकली आप वैल्यू यहाँ पे देंगे, दैट इज ऑटोमेटिकली पास ऑन टू द वेरिएबल नेम एंड कलर बाय यूजिंग द सेल्फ कीवर्ड. So we have used the self keyword for initiating an object, and then name and color, that is the variable name, and we can use. तो जो आप within a bracket जो वेरिएबल के नेम दे रहे हैं, that is the name, this one, this name and color, this should be the same, this like name and color. For example, I can use the as self dot name and
and self dot C. So N stand for the name and C stand for the color. But when we are using the equal to, so name and color जो आप यहाँ पे वेरिएबल नेम डिफाइन करने हैं, इट शुड बी सेम एज जो आपने विद इन अ ब्रैकेट सेल्फ के साथ में दिया है. यानी आप सेल्फ डॉट एन इज इक्वल टू, एक तरह से आप कह सकते हैं कि नेम का आप अलाइस क्रिएट कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द सेल्फ डॉट एन एंड सेल्फ डॉट सी. बट ये जो नेम है और ये जो कलर है, दिस शुड बी सेम एज जो आपने सेल्फ कीवर्ड के साथ में आप दे रहे हैं. So we can use the DEF init self name color, name and color like this, and then we can define the different member function by using the DEF function like DEF bark and self. ठीक है? So print I am color comma name. So you can differentiate that. यहाँ पर मुझे name and color को access करने के लिए I have to use the self dot n and self dot c. But यहाँ पर मुझे self dot color या self dot name use करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? तो ये मैंने क्लास को डिफाइन किया बाय यूजिंग द कीवर्ड क्लास. देन आई एम गोइंग टू गिव द नेम ऑफ द क्लास. देन आई हैव डिफाइंड द कंस्ट्रक्टर DEF init self. जब कभी भी आप init यूज करेंगे, ये आपका सेल्फ हमेशा कीवर्ड आपका आएगा. एंड देन वी आर डिफाइनिंग द bark function and then we are displaying something result. So now we are creating the object. So how the object is created in class? Like S1 is equal to and then class name and then bracket. ऐसे करते थे? Yes, ma'am. करते थे ना, S1 इक्वल टू देन क्लास एंड ब्रैकेट. अगर मान लो मैंने उसमें मेरा कोई आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है तो देन क्लास के साथ में मैं आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास ऑन करती. तो सिमिलरली पपी वन जो यहाँ पे यूज किया, दैट इज द ऑब्जेक्ट नेम. दिस पपी इज द नेम ऑफ द क्लास एंड दीज आर द वेरिएबल. अब आप देखो कि यहाँ पे जो यूज किया गया है सेल्फ नेम, यहाँ पर आपके दो ही वेरिएबल है, नेम एंड कलर. तो दो ही वेरिएबल आपको पास करने होते हैं, आपको सेल्फ की वैल्यू अलग से पास ऑन नहीं करनी होती. ठीक है? तो पपी वन आपको ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. तो आपका मैक्स जो है वो नेम में चला जाएगा और ब्राउन जो है वो आपका कलर में चला जाएगा. ठीक है? एंड देन यू कैन यूज द पपी वन डॉट बार्क, जो आपका फंक्शंस को जैसे हम वहां पे कॉल करते हैं, दैट ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर फंक्शंस नेम, ऐसे ही कॉल करते हैं C++ में. Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. तो सेम फॉर द, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपके, तो पपी वन एंड पपी टू आपके दो ऑब्जेक्ट हैं फॉर द सेम क्लास. तो अब बेसिकली इसमें क्लास आपकी है पपी, दो आपके मेंबर फंक्शंस हैं, एक आपका बार्क है, एक आपका इनिट है. नेम एंड कलर आपके उसके डाटा मेंबर्स हैं एंड पपी वन एंड पपी टू आपके उसके ऑब्जेक्ट्स हैं. तो आर यू कैन यू रिलेट द थिंग्स विद द C++ एंड जावा नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. So class is basically what? A code that defines the attributes and method of a kind of object. And what is the instantiation? To create an object, a single object is called an instance of a class. जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट मींस दैट विल बी द इंस्टेंस ऑफ एन क्लास. सो ऑब्जेक्ट इज बेसिकली व्हाट? The instance of a class. Means for that object or for that event, what will be the value of that class object? Fine. Ma'am. Yes, beta. Ma'am, ma'am, in this example, ma'am, we are, when we are defining the bark function, we use self. Ma'am, in this, since we are using the color name in the bark function, if we are not using the color or name, then there is necessary to write the self in the brackets of bark. Yes, beta. Ma'am, if we are not using the color name. Wait a minute. For init function, it is necessary to use the self, but for bark, it is not necessary. But when we want to access the member, जो आपने init में जो variable आपने define किए हैं, but you want to access that, we have to define the self. To basically, self is basically for accessing the data member. Okay, ma'am. मैम अगर सेल्फ के अलावा नेम एंड कलर ना लिखे फिर भी सेल्फ लिखना जरूरी होता है? You can try this. ओके मैम. You can try this. ठीक है? यस मैम. Okay. So now come to the another points. That is another simple class. Again, class keyword is there. Greater keyword is there. Comment is there. That is a virtual pad. Then DEF talk and self. Print I am an instance of a class greater. Although that I am not using the variable, but still I am using the keyword self. ठीक है?
So self keyword is there. If I'm not using the that concept, I think you have got the answer जो आपने अभी पूछा था कि if I'm not using the data member, then still we need to use the self keyword or not. Yes, ma'am. ठीक है? So we have to use that keyword self for defining the member function of a class. But Ma'am, but when we- इसमें image तो है नहीं. हाँ, तो इसमें इमेज नहीं है क्योंकि मेरे डेटा मेंबर्स नहीं है, बट स्टिल आई एम यूजिंग द सेल्फ कीवर्ड. सो व्हाट डज इट मीन कि व्हेनेवर वी आर डिफाइनिंग द मेंबर इन अ क्लास, you can say that when we are defining the method of a class, we have to use the self word. Okay, Yes. so this is the difference between the normal functions and the method. जो functions आप normally define करते हैं और जो functions आप अपने class में define करते हैं, we have to use the self keyword. For that, when we are using the concept of class or when we are using the concept of object, we have to define the functions with the self. But then normally when we are using the function, we do not need to define the function with the self keyword. Fine? Clear है अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कभी भी Yes, ma'am. आप क्लास में functions define करेंगे, we have to use the word self. When we are defining the functions normally without using the class, we do not need to use the self word. Why do we need the self keyword when we are defining the class and object? Because self is basically used to invoke an object when the object is created. So इसलिए we have to define the self, we have to use the self word. क्योंकि जो आपका ये member function है, इस member function को access करने के लिए we need to use the word self. ठीक है? Yes, ma'am. Clear है बेटा? Okay. So what class, as we discussed, the class starts with the class name, and generally आप जो भी book refer कर रहे हैं उस book में class के name को जो class name है, we are using the first alphabet of class name capital letter, but it is not compulsory. You can have the different class name. मतलब it is not compulsory to have the first letter in capital form. आप simply small case में भी use कर सकते हैं. Then we are defining the method like another function, but we have the self word. So as like defining a function must have the special first parameter, that is the self, which provide the way for a method to refer to object itself. Now you can try one thing. You define the two functions, one function with the self keyword and one function without self keyword. Now try to access those two functions using the object. You can try this option that you have to define the two functions. You can use the self keyword, and in other function you do not need to use the self word. And then try to call those two functions with the object. So you will be able to know the difference between the कि जब self के साथ आपका function है, is it accessible through the object, और जो आपके without self के साथ है, is it accessible to the object or not. So you can try this option. ठीक है? So try to make two member functions, one with the self and one without the self, and try to call those two methods with using the objects. Okay? Okay, बेटा? Yes, ma'am. Okay. जब ज्यादा हो जाए तो मुझे बता देना. So what is the class method and self parameter? A class method have only one specific difference from the ordinary function, that they must have an extra first name that has to be added to the beginning of the parameter list. This is the difference with the normal method and the class method जो आप use करते हैं. You do not give a value for this parameter. हम कभी भी self की value नहीं देते हैं. When you call the method, Python will provide it. जब कभी भी आपका object create होता है, automatically उसकी value आपकी initiate होती है. And this particular variable refers to the object itself, and by convention it is given the name self. Now did you get the point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is an instance in an object, how the object is created. So an object is created basically by using the object name equal to then class name, and with the class name we have the basis. So create new object with the class name followed by the set of parameter, or we can create the object by using this hyphen
can create an, or we can this class to another variable. We can have the multiple objects like S1, S2, S3 जैसे आपने normally C++ classes में आप करते हैं. We can have the multiple object for a class. ठीक है? How to invoke a method? As we do in the C++, like object name dot method name. Ma'am, you are not audible. Just wait a minute. I'm so sorry, beta. The network got disconnected. Pallavi, my network got disconnected. Okay. So, invoking a method we were discussing. Fine. Yes, ma'am. Okay. So we have discussed the constructor. Constructor is declared by using the init keyword. So this is the constructor. How can we create the constructor? By using the def and then init. So init basically the special method, you can say that is called by the whenever you are creating an object. Is my screen visible, beta? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, wait a minute. Now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So how can we initialize the object? That staff.name is name. We can initialize the objects. How can we initialize? How can we invoke a method? By using the object name dot method name. How can we access the attribute? By object name dot जो भी आपके attributes हैं that. And we can also define or we can do this thing in later. How to set the default values. Okay, let me finish. So
So how can we set the default value? As all of you know कि आपका पहला first parameter that will be equal to self, and then name is equal to Tom and age is equal to 20. That we have set these two parameter by default. And जब कभी भी if you are giving the value, if you are assigning the new value, you can have that value. But अगर मान लो किसी point पर अगर आप किसी object की value को assign नहीं कर सकते, तो it can pick the value from the default constructor. जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्शंस होते थे वो क्या करते हैं कि व्हेन वी आर असाइनिंग द वैल्यू दे कैन एक्सेस दैट वैल्यू, बट व्हेन वी आर नॉट असाइनिंग एनी वैल्यू, वी आर नॉट पासिंग एनी वैल्यू, इट कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और वी कैन से द फ्रॉम द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ठीक है, फाइन बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. For example, the one object is created and the person is the class name. So we are giving the value name is equal to user and age is equal to 20, and then we are displaying the print one. But when we are creating the two name having the object 2, but we are not giving any value. So this will take the value name is equal to Tom and age is equal to 20. By default, this will take the value from the constructor. Fine? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So this is the summary कि what is an object, what is an attribute, what is method, what is class, what is instance, what is self keyword, what is class constructor, and how the method is invoked. That's all today. If you have any doubt regarding this lecture, you can ask to me. Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. मैम कॉलेज कब खुल रहा है? Not sure, beta.